Director Rambau Mahalgi Prabodhini. He holds a PhD in biophysics. He has been a chief coordinator, NBA and NAC for over 10 years. He has served in Vigyan Bharati Institute of Technology for 16 years. He has joined this prestigious organization, Rambau Mahalgi Prabodhini, in December 2022. He has had a very long and strong association with nationalistic student movement. We welcome you, sir. We have with us Dr. Gajanan Dangeji, currently designated as India Coordinator, LiFE Working Group of C20, an engagement group of G20. A veterinary doctor by training and has now spent 25 years working in developmental sector. He is a founder president of YOJAK, Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development, a member of National Rural Livelihood Promotion Society under National Rural Livelihood Mission, Ministry of Rural Development. He has represented Bharat on international forums of like BRICS in 2021 and 2022. He has shared his expertise in Bharatiya developmental philosophy on these forums. We welcome you, Dr. Gajanan Dangeji. We have Mr. Shailesh Singhalji, founder of Youth of India Foundation, who is coordinating C20 LiFE in India. A young law graduate, Shaileshji has served as the youngest district officer in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Shaileshji has been one of the 60 fellows to be nominated by the government of Saudi Arabia to be part of Y20 community and has earlier represented Indian voices in the official youth summit of G20 Y20 summit on behalf of Government of India in Germany. Hearty welcome, Shaileshji. With this introduction, I now request the dignitaries to inaugurate this conference of C20 LiFE by Deepa Prajwalan. As light dispels darkness, knowledge dispels ignorance. We light the lamp to signify the triumph of knowledge and goodness over ignorance and evil. Thank you. I now call upon Dr. Shri Jayant Kulkarni ji to felicitate Srimati Nivedita Bhide ji, presenting token of our love and respect. Thank you, Honorable Nivedita ji, for accepting the felicitation, and thank you, Dr. Jayant ji, for doing the honors for us. I now request Dr. Shri Jayant Kulkarni ji to give his welcome note. नमस्कार। सभागृह में उपस्थित आदरणीय भागैया जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय निवेदिता जी, डॉक्टर गजानन जी, शैलेश जी और
पर्यावरण सन्मुख जीवन शैली राष्ट्रीय परिषद को उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के आप सभी प्रतिनिधि, आप सभी का रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के इस नितांत सुंदर प्रांगण में हार्दिक स्वागत। आप सभी प्रतिनिधि गत 6 महीने से अपने अपने विषयों का चिंतन करने में जुट चुके थे, लोगों से जुड़ रहे थे, विभिन्न संस्थाओं की राय अवगत करने में जुट चुके थे। देश के हर एक प्रांत में पर्यावरण सन्मुख जीवन शैली का कौन सा पहलू लेके जाना उचित रहेगा, इसका चिंतन आप लोगों ने किया। अक्टूबर से जो ये सिलसिला शुरू हो गया, एक एक थीम के साथ कार्यकर्ताओं का समूह काम करने लगा और जिस तरीके से, जिस सुचारू तरीके से C20 अंतर्गत ये जो पर्यावरण सन्मुख जीवन शैली का कार्य समूह गठित हुआ, उसका काम सुंदरता से विथ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से हो चुका है, जो मैंने अनुभव किया है। G20 के साथ जो राष्ट्र समूह जुड़ चुके हैं, उनका यह कहना है कि जब समाज के विकास की बात होती है, विकास का प्रारूप रखने की बात होती है, तो शासन प्रमुखों का केवल यह दायित्व नहीं होना चाहिए। जो लोग समाज के साथ काम करते हैं, समाज का हिस्सा बनकर काम करते हैं, समाज को सहभाग लेकर काम करते हैं, ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं का भी राय अवगत होना जरूरी है। उस दिशा से एंगेजमेंट ग्रुप करके सिविल सोसाइटी 20 सभी 20 देशों में जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती है, उनका एक समूह बनाया गया और ये समूह को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से बात करें, संस्थाओं से बात करें और समाज के मन में विकास का प्रारूप क्या है, उसकी एक अवधारणा पैदा करें, उसका एक आकलन हमें दे दे। उस दृष्टि से हिंदुस्तान में जब C20 का गठन हुआ तो उसका सेक्रेटरीट, उसका एक संचालन करने की जिम्मेदारी रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी को दे दी गई। माता अमृतानंदमयी मठ की नेतृत्व में, अध्यक्षता में विवेकानंद केंद्र है, सत्संग फाउंडेशन है और उसके साथ अमृतानंदमयी मठ है। ये तीनों संस्थाओं के साथ मिलकर रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी गत 6 महीनों से इस कार्यक्रम का, ऐसे परिषदों का लगातार आयोजन कर रही है। समाजसेवी संस्थाओं का अपना एक स्थान समाज में है। सामाजिक समस्याओं का चिंतन करना, अध्ययन करना, उसके जड़ में जाना, कौन से सॉल्यूशन देना जरूरी है, उसकी सोच एक डेवलप करना, समाज को साथ लेके, सरकार को साथ लेके, दोनों की साझी भागीदारी से समस्याओं का निराकरण करना, यह साधारण स्वरूप कौन से भी स्वयंसेवी संस्थाओं का होता है। पर्यावरण सन्मुख जीवन शैली के साथ जो अन्य समूह C20 के साथ काम कर रहे हैं, उसमें सेवा है, उसमें ह्यूमन राइट्स एज ह्यूमन वैल्यूज है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लाइवलीहुड एंड आर्ट क्राफ्ट्स है, डिलीवरिंग डेमोक्रेसी है। ये सब कार्य समूह देश के विभिन्न प्रांतों में जो संस्थाएं काम करती है, उनसे जोड़ने का काम उनका शुरू किया है। लगभग 679 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेशन ये पूरे 14 वर्किंग ग्रुप्स के डिस्कशन में आज तक हो चुका है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन एक्टिविटीज। जो 6 महीने में चर्चा हुआ है, एक डिस्कशन डेवलप किया है, उसका एक अंतिम पड़ाव अभी ऐसे परिषदों से सामने आ रहा है। whatever discussion, whatever thought process we have gone through, now it is going to convert into a wonderful policy brief. ये पॉलिसी ब्रीफ G20 सेक्रेटेरिएट को दिया जाएगा एंड दिस इज हाउ द कॉन्फ्रेंस स्टैंड्स हियर। आप सभी लोगों का जो चिंतन है, वो चिंतन का एक कन्वर्शन अभी पॉलिसी ब्रीफ में हो जाएगा और रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी में होना ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है।
उसको अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि ये संस्था फ्रॉम लास्ट 4 डिकेड्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल टाइप ऑफ नेशनल एंड सोशल डिस्कोर्सेस। प्रबोधन, प्रशिक्षण और संशोधन, ये त्रिसूत्री के साथ प्रबोधिनी का काम चलता है। रामबाऊ म्हालगी जो पुणे से विधानसभा के प्रतिनिधि थे, बाद में रामबाऊ म्हालगी प्रबोधिनी जिस ठाणे डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वो ठाणे का लोकसभा का प्रतिनिधित्व रामबाऊ म्हालगी जी ने किया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पर्सन हु एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ ए साइंटिफिक ट्रेनिंग फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट। राजनीति करना ये कोई खेल नहीं है। राजनीति से जब आपको व्यवस्था परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो एक सुचारू प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और सभी राज्यकर्ता वर्ग को, सभी समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रशिक्षण मिलने की एक शास्त्र शुद्ध सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इस तत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया और आदरणीय रामभाऊ जी के मेमोरी में, उनकी स्मृति में यह संस्था का निर्माण हुआ है। अच्छा लाइब्रेरी है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ हम स्टार्टअप से जुड़ चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों में नेतृत्व गुण विकसित करने का प्रयास करते हैं। रामबाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के इस प्रांगण में जो जो कार्य चल रहा है, उसकी दिशा राष्ट्र और समाज का सही तरीके से एक संचालन करना उतना ही है। आप सभी प्रतिनिधियों का फिर एक बार प्रबोधिनी की प्रांगण में हार्दिक स्वागत, और 2 दिन में जो डिस्कशन हो जाएगा, उससे जो पॉलिसी ब्रीफ निकल के आएगा, उस काम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। Dr. Jayant Kulkarni ji, thank you so much. Now I call upon Dr. Gajanan Dangeji, India Coordinator C20 LiFE, to take us through the process, programs and activities of C20 LiFE conducted in its journey since inception. C20 के अध्यक्ष पूज्य माता अमृतानंदमयी के चरणों में वंदन। इस कमेटी के पूज्य श्री M के चरणों में वंदन। भारत की ओर से स्टीयरिंग कमेटी में आदरणीय निवेदिता ताई को भी वंदन। मंच पर विराजमान डॉक्टर जयंत जी, शैलेश जी, इस सभागार में उपस्थित आदरणीय भागैया जी, पूज्य गौरांग दास जी, रामानंदामृत स्वरूप जी, विनय जी यहाँ आज नहीं है, विनय सहस्त्रबुद्धे जी कुछ कारणों से, माननीय विनय जी हमेशा इस प्रक्रिया में रहे हैं, ब्रिगेडियर गणेशम जी और यहाँ पर उपस्थित गोपाल जी और सभी मान्यवर महोदय। यह कार्यक्रम C20 LiFE वर्किंग ग्रुप के द्वारा हो रहा है। इसके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में एड्रियाना साल्झार कोलंबिया से कोऑर्डिनेट कर रही है। उनका भी बहुत धन्यवाद। इस सारी प्रक्रिया में उन्होंने विभिन्न देशों के साथ संवाद किया। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2 दिन पश्चात आने वाला है, उसके पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ पर इस चर्चा गुट द्वारा पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, इस विषय के भारत की कल्पना के अनुसार एक ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत चर्चा हुई कि ये कार्यक्रम को इवेंट न किया जाए, इसको कम से कम प्रवास, कम से कम फुटप्रिंट, जो लोग चर्चा में सम्मिलित है ऐसे कम से कम लोगों को बुलाना, अधिकाधिक लोगों ने अपने अपने स्थानों से सुनना, उनको अपनी प्रक्रिया भेजना, उन्होंने अपने अभिमत भेजना, ताकि कितना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, ऐसी सारी बातों की बहुत सारी चर्चा होने के पश्चात इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
भारत की प्रेसिडेंसी प्रारंभ होने के कुछ माह पूर्व से ही हम लोगों ने एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी कि जब ये प्रेसिडेंसी आएगी, प्रारंभ होगी, तो भारत के सामाजिक संस्थाओं ने इस सुनहरे अवसर का उपयोग और बेहतर तरीके से कैसे करना चाहिए, कौन सी ऐसी संकल्पनाएं हैं जिनका इस प्रेसिडेंसी के समय में आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करना चाहिए, कौन से ऐसे बिंदु हैं, ऐसी सारी भूमिका के लिए हम लोगों ने एक भारत के प्रमुख लोगों को एकत्रित करके हुए एक भूमिका पत्र तैयार किया। और उस भूमिका पत्र के तैयारी में जो जो लोग सम्मिलित हुए उनको साथ लेकर हमने इस वर्किंग ग्रुप की प्रक्रिया को आगे चलाया है। हम लोगों ने प्रारंभ से ये पर्यावरण सम्मत जीवन शैली के दृष्टिकोण से दो बातों पर चर्चा की है, एक जीवन दृष्टि और एक जीवन शैली। इस चर्चा के आधार पर हमने बातों को संकलित करने का प्रयास किया है। जब ये भूमिका पत्र तैयार हुआ, तब इस C20 लाइफ के वर्किंग ग्रुप में जीवन से संबंधित कौन से विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा भी एक मंथन भारत के प्रमुख लोगों के साथ हुआ। और उस चर्चा के पश्चात जो मर्यादित समय हमारे पास है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चुनिंदा विषयों पर इस वर्किंग ग्रुप ने काम करने की प्रक्रिया चलाई। उसमें ग्रास रूट इनोवेशंस, फूड, यूथ, वाटर, वेस्ट, हैबिटाट, फैशन, एजुकेशन, इंडिक स्क्रिप्चर्स, इंडस्ट्री, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इस प्रकार के विषयों को चर्चा करने के लिए आग्रहपूर्वक भारत के लोगों ने और भारत के कुछ बाहर के लोगों ने भी आग्रह रखा कि इन बिंदुओं पर समाज में विचार मंथन होना चाहिए। इसके साथ हमने उन्नत भारत अभियान के द्वारा इस संपूर्ण प्रक्रिया में युवाओं को, भारत के जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले युवा हैं, इनको जोड़ने का प्रयास किया। और साथ साथ में हम लोगों ने इस केवल चर्चा तक ये बात सीमित न रहे, इसके लिए हम लोगों ने भारत का एक विशेष जिला नंदुरबार, जो वर्तमान डेवलपमेंट के फुटप्रिंट्स के द्वारा इंडिकेटर्स में कुछ पीछे चल रहा है सबसे, ऐसे जिलों में एक कम्युनिटी एक्शन के द्वारा भी कुछ बातों को स्थापित करने का एक कार्यक्रम तैयार किया। तो पॉलिसी डिस्कशन से लेकर एक्शन प्रोग्राम तक ऐसा ये सारा डिजाइन लाइफ वर्किंग ग्रुप ने बनाया। 30 से अधिक संस्थाएं जिनका अस्तित्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ऐसे 30 से अधिक संस्थाओं ने ये प्रत्यक्ष चर्चा को लीड करने का और उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने का प्रयास ये सारी प्रक्रिया में किया। उन्होंने सैकड़ों लोगों से संवाद किया, मगर इस सारी प्रक्रिया में 30 से अधिक संस्थाओं ने ये आज जो कुछ संकलन हुआ है उसका नेतृत्व किया है। जब ये सारी चर्चा चल रही थी तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जब पॉलिसी के दौर में जाएगा तो G20 की अपेक्षा यह रहती है कि जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशन आएगा उसके कुछ न कुछ लिविंग उदाहरण भी होने चाहिए। नहीं तो हम लोगों ने केवल विचार के आधार पर कुछ सोच करके केवल सूचनाएं कर दी और वो कहीं है ही नहीं, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही सभी थीम कोऑर्डिनेटर्स ने इस बात पर चर्चा करके निर्णय किया था कि हम लोग जिस बिंदुओं पर मंथन और समाज की राय चाहते हैं, ऐसे समय में वर्तमान में उस विषय को लेकर जिन्होंने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है भारत में और भारत के बाहर भी, ऐसे सभी समुदायों के अनुकरणीय उदाहरणों को डॉक्यूमेंट करने की प्रक्रिया की। और आनंद होगा सबको जब ये सारी प्रोसेस को आप और गहराई से देखेंगे। तो जिन बातों की, जिन समस्याओं की
विश्व में चर्चा चल रही है, ऐसे लिविंग उदाहरण बहुत अनूठे तरीके से लोग भारत में जी रहे हैं और एक बहुत सुंदर उनका प्रयास सबके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया में कुछ इवेंट्स फिजिकल हुई, बड़े कार्यक्रम हुए, और कुछ वेबिनार्स हुए, लेक्चर सीरीज हुई। 25 से अधिक वेबिनार्स के द्वारा विभिन्न लोगों की राय जानने की और अपनी चर्चा के लिए विषय प्रस्तुति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। अधिकाधिक लोगों के मतों का संकलन हो। कुछ लोग उस समय पर जुड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल तैयार किया गया है। इसका फेसबुक है, ट्विटर है और विभिन्न माध्यमों से भी इस प्रकार की सारी प्रक्रिया में विभिन्न लोगों की राय लेने की प्रक्रिया चल रही है। जो चर्चाएं हुई उस चर्चाओं में यहां के ग्रुप्स ने भी कुछ भारत के बाहर के लोगों को राय जानने के लिए वेबिनार्स में बुलाया था, और भारत के बाहर एड्रियाना जी ने भी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ चर्चाएं की। तो इस पूरी प्रक्रिया में 15 देशों से लोगों ने विभिन्न विषयों पर अपनी अपनी राय इसमें दी है। बहुत सुंदर इनपुट्स हम लोगों को विदेश के अपने विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी प्राप्त हुए हैं। ये सारी प्रक्रिया में प्रारंभ से ही हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंटेशन टीम तैयार की है। जैसे जैसे हम लोग इसकी प्रक्रिया को देख रहे थे तो एक एक सब थीम का इतना सुंदर कार्यक्रम और इतना संकलन सुंदर हुआ कि उसका एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और ये इस कार्यक्रम के पश्चात उन सभी विषयों के जो भी कुछ रिपोर्ट्स हैं वो भी सबके लिए उपलब्ध किए जाएंगे। हम लोगों ने प्रारंभ से ही एक पॉलिसी टीम का भी गठन किया है, और जहां जहां पर ये सारी चर्चाएं विचार विमर्श चल रहा है उससे पॉलिसी ब्रीफ संकलन करने की तैयारी प्रारंभ से ही कर रहे हैं। और जैसे कि इसमें एक आग्रह है कि हम लोग कुछ पिछली प्रेसिडेंसीज में जो कुछ बातें हुई, जो कुछ चर्चाएं हुई, जो कुछ विषय उभर कर आए, उनसे भी सलाह मशवरा करते हुए हम लोग उनसे भी कुछ उनके जो कुछ लर्निंग्स है पिछले प्रेसिडेंसीज के, उनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए आगे चलना, इस प्रकार की जो अपेक्षा ये सारी प्रोसेस में होती है। तो पॉलिसी टीम ने इस प्रकार के जो विषय है पहले के रिकमेंडेशंस को भी सम्मिलित करते हुए इस चर्चा में उसको कैसे हम लोग आगे और वैलिडेट कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया ये सारी बातों को लेकर आगे बढ़ाई थी। आज का जो कार्यक्रम है इसकी रचना हम लोगों ने ऐसी सोची है कि जो सब थीम कोऑर्डिनेटर्स है जिन्होंने अपने अपने विषयों में अत्यंत बारीकी से सारा संकलन किया है, वो अभी भी हमने फाइनल नहीं किया है। आज हम लोग यहां पर जो निमंत्रित लोग हैं उनके सम्मुख वो विषय प्रस्तुत करेंगे कि हमने क्या संकलन किया। और अभी भी ये खुला है कि हम लोग आपस में इसकी चर्चा करें, और अगर हमारे अलग वर्किंग ग्रुप में दूसरे कुछ विषयों के लिए अगर कुछ अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं उसका संकलन करने की प्रक्रिया, इसके लिए ये 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोगों ने सभी वर्किंग ग्रुप्स, भारत में जितने वर्किंग ग्रुप्स C20 के अंतर्गत चल रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को इसकी सूचना भेजी है कि आप ये 2 दिवसीय कार्यक्रम को सुनिए। इसके पश्चात लाइफ वर्किंग ग्रुप के अलावा भी जिस वर्किंग ग्रुप में लाइफ से संबंधित, जीवन शैली से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं, G20 के अन्य ग्रुप के पास कुछ सूचनाएं हैं, तो वो सारे लोग इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को सुने। इसको लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, इसका वीडियोस सारे रखे जाने वाले हैं, और वो सुनने के पश्चात भी हम लोग 10 तारीख तक ऐसी सारी सूचनाओं का संकलन करने की प्रक्रिया सोच रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारे सभी ने अपने अपने जो अनुभवों को संकलित किया है
वो सबके साथ और समृद्ध बनाने की प्रक्रिया है। आप सब लोगों ने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। अब तक तो बहुत इनपुट्स दिए ही है, मगर अब थोड़ा और क्रॉस लर्निंग करके इस पॉलिसी ब्रीफ को और बेहतर बनाने की प्रक्रिया करेंगे। निवेदिता ताई इस पूर्ण समय हमारे साथ रहेगी। इसके लिए नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की ओर से वो हम लोगों को मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया उनके द्वारा ही G20 तक जानी है। तो ये संपूर्ण समय वो उपस्थित रहने के लिए अत्यंत हृदयपूर्वक उनको अभिवादन करता हूँ और मेरी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Dr. Dangeji, for comprehensive context setting. Now moving forward, let us present our pranams at Puja Amma's lotus feet. We are fortunate to have our beloved Puja Amma's Mata Amrutanandamayi Ji's message for this August gathering. I request the desk to play the video, please. പ്രേമസ്വരൂകളും ആത്മസ്വരൂകളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനുഷ്യ ശരീരവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റ് ചരാചരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഉറവിടം പ്രകൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒന്നാണ്. ഈ സത്യം അനുഭവതലത്തിൽ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഋഷികൾ വസുദൈവ കുടുംബമെന്നും ഉദ്ഘോഷിച്ചത്. ഈ ഉപനിഷത്ത് വാക്യം G20 ആദർശവാക്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഉചിതമായി. മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ലോകജീവിതം സുഗമവും സുഖകരവുമാക്കാൻ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പലതരം ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ശക്തി, സൈനിക ശക്തി, ആയുധശക്തി, സാമ്പത്തിക ശക്തി, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ശക്തി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുടെയും വികസനത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ശക്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ മഹാശക്തിയായ പ്രകൃതിയെ മറന്നുപോകുന്നു. നാം ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള വലിയ സത്യം മറന്നുപോകുന്നു. അത് മനുഷ്യനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ പ്രകൃതി ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ മറവി രോഗം ബാധിച്ചവരെ പോലെ കഴിയുകയാണ്. എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുമായി അകലും തോറും അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ഈശ്വരൻ്റെ മുഖമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ അജ്ഞാനവർത്തിയാണ്. അത് നിർജീവമാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്നൊക്കെയുള്ള മിഥ്യാധാരണ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. പ്രകൃതി ഒരു ശരീരമാണ്, അത് ഏകമാണ്. ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെല്ലാം അഭേദ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതിയിലെ ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സകലതും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ അവയവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വികസനം പ്രായോഗികമാക്കാൻ കുറേ കോൺഫറൻസുകളും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും നടത്തിയതുകൊണ്ടോ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയതുകൊണ്ടോ മാത്രം സാധിക്കില്ല. അതിന് മനുഷ്യൻ്റെ മനോഭാവം മാറണം. മനസ്ഥിതി മാറ്റിയാൽ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രം. കാരണം നമ്മൾ പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമാകുവാൻ പ്രകൃതിയുമായി സുരചേർന്ന് നീങ്ങേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആളുകൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നെടുത്ത് മണ്ണെടുത്ത് നോക്കി മൊത്തം പോയിസണായിരുന്നു. അവിടെ വൃക്ഷം നട്ട് വളർത്തി. അതൊരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മണ്ണെടുത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വിഷമേ ഇല്ല. ആ വേരെത്ര വിഷം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇലകൾ നമ്മൾ കാർബൺ എത്ര എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധവായു തരുന്നു. വൃക്ഷത്തെ ഈശ്വരനെപ്പോലെ ആരാധിച്ചിരുന്ന പഴയ ആൾക്കാർ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു വൃക്ഷം വെട്ടുമ്പം പൂജിച്ച് മാപ്പി വെച്ചിട്ട് വെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും അന്ന് നമ്മൾ ആരാധിച്ചത് തന്നതിനുള്ള നന്ദി കാണിച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മളതൊരു പ്രാകൃതമല്ലാത്ത പ്രായോഗികമായിരുന്നു. അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ. പണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൽ 60 വർഷം മുമ്പ് കൈക്കൊരു മുറിവെല്ലാം പറ്റിയാൽ നമ്മൾ ചാണകം എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു.
മുറിവ് പൊറുക്കും. ഇന്നത്തെ പശുക്കളുടെ ചാണകം തട്ടിയ സെപ്റ്റിക്കാവും. അന്ന് ഔഷധമായ ചാണകം ഇന്ന് പോയിസണായി. എന്താണ്? പണ്ട് പശുക്ക് പ്രകൃതമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്താണ് നീങ്ങിയത്. അന്ന് ഈ വിഷവെള്ളമൊന്നും നെല്ല് ചേർക്കില്ല. ഇപ്പോൾ വിഷവെള്ളം ചേർത്ത കച്ചിയാണ് പശു തിന്നുന്നത്. പിന്നെ എല്ലുപൊടി, കെമിക്കൽ ചേർത്ത എല്ലുപൊടി അങ്ങനെ തിന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പാലിനും അത്ര കണ്ട് ഗുണമില്ല. അത് നമുക്ക് വിശപ്പടക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോഷകാംശം കുറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പാൽ കിട്ടി, അത്ര അസുഖം കിട്ടി. സയൻസ് 5% വിഷവെള്ളം ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് 25% വിഷവെള്ളം ചേർക്കാൻ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നല്ലതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം നല്ലതാകണം. വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് അതിനുള്ളൊരു ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. KG മുതൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഉപരിപഠനത്തിലും നിസ്വാർത്ഥത, കാരുണ്യം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങണം. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകം നിർബന്ധമാക്കുക. തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ ജന്മനാളിന് ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ നടണം. അതിനെ സ്നേഹത്തോടും ആരാധനയോടും പരിപാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക. 100 വിത്തുകൾ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വളവും ഇട്ടിട്ട് കെട്ടി കാട്ടിൽ കൊണ്ടെറിയുക. കാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമോ ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ ഇലകൾ തന്നെ വളമാകുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം വളരുകയാണ്. അതിലൊന്നെങ്കിലും ചില 10 ഒന്നെങ്കിലും വളർന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവം എല്ലാവരും ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാ കോഴ്സുകളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വിദ്യാർത്ഥികളെ സാധാരണക്കാരും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരും താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അവരയക്കുക, അവരെ കൊണ്ടുപോകണം. അവരോടൊപ്പം താമസിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചും പഠിച്ചും പ്രോജക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറയുക. കടുത്ത സ്വാർത്ഥതയുടെയും മത്സരത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആ അനുഭവം അവരുടെ അല്പമെങ്കിലും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും വിത്തുകൾ നമുക്ക് വിതയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്രകൃതിയുടെ അന്ധമായ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് വിനയം ശീലിക്കുവാൻ ശിക്ഷണം നൽകുക. പ്രസവിച്ച അമ്മയേക്കാൾ ഉപരിയായി, അച്ഛനേക്കാൾ ഉപരിയായി പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്ദി കാണിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ജീവിത വൃക്ഷം സ്നേഹമാകുന്ന മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കട്ടെ. സക്കർമ്മങ്ങളാകട്ടെ അതിലെ ഇലകൾ, അനുകമ്പാപൂർണമായ വാക്കാകട്ടെ അതിലെ പുഷ്പങ്ങൾ, ശാന്തിയാകട്ടെ അതിലെ ഫലങ്ങൾ. സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി തീർന്ന് ഒരു കുടുംബമായി ലോകം വളർന്ന് വികസിക്കട്ടെ. വസുദൈവ കുടുംബം എന്ന ഈ വാക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കി എല്ലാവരും ഉണർന്ന് ഫലവത്താക്കാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ ശാന്തിയും സമാധാനവും കളിയാടുന്നൊരു ലോകം നമുക്കെല്ലാം സായത്തമാകട്ടെ. കൃപ നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Our pranams at Amma's lotus feet again. C20 India 2023 is being led by Honorable Vijay Nambiar ji, who is a Sherpa C20 India 2023. He could not be here physically with us because of some unavoidable reasons, but he has sent us his kind message. I request the desk to play his video, please. Ladies and gentlemen, I am most delighted to be with you virtually on the occasion of the C20 Lifestyle for Environment Conference, which you are holding in Mumbai today. I am most regretful that I am unable to be with you personally for some unavoidable reasons. This year, India has been pursuing an active agenda across the world. As External Affairs Minister Jaishankar has said, only a few days ago, the government of Prime Minister Modi is focused on building greater capabilities
assuming more responsibilities and shaping the big issues of the day. India's chosen theme of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, carries with it both a sense of expansiveness as well as one of inclusion. As chair of the civil society component of C20, Mata Amritanandamayi Devi, or Amma, embodies this spirit wholeheartedly. Mission Life, or Lifestyle for Environment, is an important expression of this approach. When launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi in Gujarat last year, it symbolized his determination to drive home to his countrymen as well as to the world his deeply held conviction that individual action lies at the core of climate responsibility. The choices you have in your daily lives and those that you make have a profound impact on the planet we call home. It is through the collective efforts of civil society that we can strive for a sustainable future and preserve the environment for the generations to come. The LiFE Working Group of the C20 is trying to translate that sublime vision into a reality. To convert nature's bounties to benefit all human existence, we need to innovate. But such innovation must come from the grassroots level. Where grassroots innovations are employed in a sustained manner and with imagination, they become life-supporting activities and contribute to what has been described as regeneration, repetition, and recycling, as well as being productive and life-affirming. Through its various webinars, chowpals, and samaj shalas, C20 LiFE has showcased the individual or communities who are trying to live environmentally sound lifestyles, and their experiences and learnings are shared with both students as well as the broader public. If lifestyle for environment is to be a public movement or a Jan Andolan, it must rely on mobilization of people across India to become truly pro-planet. You have tried to base this mobilization on the traditional knowledge from across the 6 lakh villages of India and using the wisdom that was kept alive over the centuries and worked in harmony with the land, the rhythms of its climatic and crop cycles, as well as handled the ecosystems and local resources to heighten their native resilience. These nature-based innovations have had high impact among the local rural population. They have also remained sustainable because they work in harmony with the natural environment. As a responsible member of the international community, India is fully committed to make the transition to a net zero emission target by the year 2070. To achieve this, we are aware of the need to adopt and promote an environmentally friendly lifestyle from now itself, and to drive both government as well as industry towards the creation of infrastructure and markets that both support sustainable production and consumption, as well as drive the population towards changing domestic demand in the direction of a gradual yet effective transition to an all-green, productive economic system. India's G20 priorities are all evident to all of you. The transformation towards sustainable lifestyle and the active engagement of civil society is a multifaceted and complex process. It requires collaboration, dialogue, and partnerships among various stakeholders, including governments, businesses, academia, and individuals. Governments must create the enabling infrastructure that supports sustainable practices through policy frameworks, regulations, and financial incentives. Businesses should adopt sustainable practices throughout their value chains, from sourcing to production and distribution. Academia can contribute by conducting research, developing innovative solutions, and providing evidence-based recommendations. However, it is the collective action of civil society that can act as a catalyst for change, bridging the gaps between these various actors and fostering a sense of urgency and commitment towards environment sustainability.
In building awareness through community actions, your documentation of the development footprints of the Nand Darbar district of Maharashtra is particularly impressive. This tribal district has been facing issues like distress migration, natural resource degradation, and vulnerability to climate change. Your mobilizing of the various stakeholders from the district, including engineers, architects, doctors, teachers, business, and the public, who participated in a series of chowpals and samadshalas to prepare a roadmap for developed Nand Darbar district right up to 2050, is a huge step in social mobilization. I understand this will also be part of C20 LiFE policy discussions. A drive for plantation of 25,000 native Indian trees is planned in June-July this year in the Satpura region of Nand Darbar under C20 LiFE. This is truly commendable. There can be no trade-off between meeting the needs of the present and taking into account the needs of the future. There can be no solution to the problems of the present that does not take a longer-term perspective into account. We owe it to our future generations to take this approach. The 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change both clearly acknowledge our duty to future generations. And as concerns about sustainability and climate justice have mounted, these duties of our current generation to future ones are being invoked more often and with more urgency. The LiFE Working Group covers these aspects through various sub-themes like grassroots innovation, Panchatattva, food, circularity, water, habitat, waste, education, fashion, and nature-based solutions. The Honorable Sri Gajanan Dange has emphasized this repeatedly when he speaks of Jivan Drishti and Jivan Shaili. He sees both as interconnected. Jivan Drishti manifests Jivan Shaili, and experience from Jivan Shaili refines Jivan Drishti. You have brought together relevant stakeholders to deliberate and discuss various facets of human life and come up with recommendations pertaining to both life vision and lifestyle. Your deliberations are focused towards building an ecosystem of civil society organizations who will continue to work upon the lifestyle for environment during the subsequent G20 presidencies. These efforts will generate a critical mass in the system and bring momentum to individual and community efforts towards sustainable lifestyles for all. This working group anchors its work on the bedrock of the dictum, life, that is, lifestyles for environment, is our responsibility. As you identify new and striking udaharans or examples, we hope you will also secure the involvement and proactive participation of other G20 member countries as well as non-G20 members in the task of building a sustainable and resilient way of life. That is the way you will show the world the truth of the C20 tagline, "You are the light." Thank you. Thank you, Honorable Nambiarji. Thank you for wording the spirit of C20 LiFE so aptly and his kind wishes. We also have a video message from Honorable Troika member Indonesia, Mr. A. Mahtuchan. I request the desk to play the same. Namaskar, dear Chair of C20 India 2023, Mother Ama, dear Troika member Swamiji and Alessandra Nilo, dear Sherpa of C20 Vijay Nambiarji, Suserpa, Kiranji and Swadesji, dear Steering Committee and International Advisory Committee, dear Coordinator Working Group of LiFE, Lifestyle and for Environment, Gajananji, Sailesji and Adriana Salazar Vega, dear CSO activists and leaders across the globe. My name is Aha Maftuhan. I'm the Troika member of C20 India 2023. Previously, I'm Sherpa of C20 Indonesia 2022. Currently, I'm an executive director of the Prakarsa.
CSO research and policy advocacy based in Jakarta, Indonesia. As a Troika of C20 India 2023, I would like to express my highest appreciation to all CSO that are active in the lifestyle for environment working group of C20 India 2023. Colleagues and friends, environmental degradation and climate change are global problems that affect our population across the world. As a top-down approach, the various policies and international commitment on climate mitigation already in place, but that is not enough. We need to add our efforts with a bottom-up approach, which are some actions at the individual level, family level, and community level. On the other hand, we need also to develop some policies that will strengthen change at the individual and community behavior, such as excise tax on fossil fuel consumption that will reduce our ecological footprint. So, policy action and individual action will accelerate sustainable lifestyles. As Sustainable Development Goals number 12, responsible consumption and production, economic growth and sustainable development must be harmonized. We must encourage industries, businesses, and consumers to recycle, to reduce waste. Colleagues and friends, as Civil 20, we must work together as one family to push the policy implementation, as well as to propose the ambitious and the concrete policy recommendation that will be changing our social, economic, environmental behavior. That is all from my side. And no, I would like to once again congratulate to Lifestyle for Environment Working Group of C20 India 2023 for hosting this seminar. Thank you very much for everyone who participated, and I hope we have a fruitful seminar, and let's come up with the ambitious and concrete policy recommendation for G20 India 2023. Salam. Thank you, Honorable Matujanji. Now may I request Honorable Nivedita Bhideji to share her remarks, please. Respected Dr. Gajanan Dangeji, Shri Kulkarni ji, Shailesh ji, and very respected person sitting in the audience, my namaskars to you all. This working group, Lifestyle for Environment, is now having its summit seminar. And all other working groups also are in the same process. Some have completed, some are doing it. You know, in human society, the upward development with evolved consciousness is foregone conclusion. Humanity has to evolve. But it is not the straight upward process. It's a spiral process. We go up and down, but surely we are going upward. So in that, sometimes the development is outer, the inner development is lacking. Sometimes it is inner, the outer is lacking. And thus we have to keep on matching both. We know the last
2-3 centuries, because the world became West-centric, the inner development took a backseat and the outer development was given more weightage. It is something like that a jet aeroplane is having the engine of a car. So it cannot go. It cannot take off. So the outer development and inner development has to match. The inner awareness in the change, improved lifestyle, comforts, should have been matching. The stress on that should have been matching in human society. Unfortunately, that was not done. And therefore, we see the disintegration of the families, the communities, degradation in environment, and all along certain challenges which sometimes appear, the challenges for existence itself. But as I told, and we all believe, that whether human society is aware or not, wants it or not, is consciously striving for it or not, it has to evolve upward. The process is spiral, it's not straight. And therefore, by providence, the occasion comes when we are forced to look within. And we are forced somewhere to correct ourselves. As in Amma's message it was said, the outward things are not going to help much. We have to check our attitude, check our approach. That's what we have to look within. And therefore, we feel it is the providence which has, with an example, of course there are many efforts going on, but this is one, we can say at multinational level, the effort in which, because of the presidency of G20 in India, one of the verticals, and very important vertical at that, C20, that is Civil Society 20, its presidency also is in India. And it is led by none other than our Amrutanandamayi, Mata Amrutanandamayi Devi, or whom we call endearingly as Amma. Somewhere the oneness, the love, the care for others, others are only extension of the self, and this is what we have to focus upon. So in India, when the members who are there in the core group, they were discussing and deciding what all topics are to be taken for working group, we felt that this is our duty. What civilizational strength or civilizational uniqueness India has, India should pass it on through this C20 to the whole world in the interest of the humanity. And that is what in all C20 groups we have tried to focus on, that inner development, correcting the within, so that the outer distortions we are taking place can be taken care of. How much we succeed or not, I do not know. We have to strive. And C20 of course will be over within few days, few months in India, but the work which each working group involving so many of NGOs and civil societies we have taken up, that should continue, because that is what is the purpose of India, to guide the whole world in inner development, in spiritual development. And let us hope that though we are in Summit Seminar, the work of life and all the NGOs who were involved in this and in all other working groups will continue. So with this, I conclude. Thank you. Thank you, Honorable Nivedita Tai. May I now request Shri Shailesh Singhal ji to present the vote of thanks.
I think with this entire message that I've been given the responsibility of proposing the vote of thanks, it is so important to first understand that it is the first time an institution or an engagement group like C20 really embodies the culture that the Bharat or the India has been propagating for a long time. The very chair happens to be a mother where we continuously showcase that how spirituality led by womanhood can really propagate the message of the lifestyle for environment. And we really want to thank our dear Amma for chairing and for guiding all of us in this. At the outset, I remember, and I would like to share this with all of you as being part of the LiFE Working group. I was traveling from Siliguri on an Indigo flight. And in the flight, I'm trying to share how different stakeholders are now propagating the message of life that you and I are all part of. They're explicitly mentioning that we should download an app where you can track, we can share your best practices. Now, first, which started as a fashion statement, first, which started more of sharing about your practices. Now, different stakeholders are coming and taking part of it. And with this, I would like to thank our very own National Coordinator, Dr. Gajanan Dangeji, for driving that message with the spirit of collectiveness of bringing all the civil society's organizations together. In the message of our Sherpa, Nambia sir, it was explicitly mentioned, and being part of the different G20s starting from 2017 in 2020, 2022, I am very confident to share that this is first of those C20s which are not just bringing civil society's organizations, NGOs in one place, but we are also trying to bring 6 lakh societies in forms of villages together. This is possibly one of those C20s which has really embodied the principle of not just few selected organizations sitting in the house, but has brought collectively all the voices of marginalized communities, indigenous communities, and from the far off places as well, including Northeast or maybe from the southern region. And that really embodies what C20 would be, not just in the learning from the past presidencies, but also a showcase in the future. So we really like to thank the Secretariat as well for the Rambhav Mahalgi Prabodhini for really pushing that agenda forward and showcasing what 25 years of G20s could propagate till we have the 2047 vision with the lifestyle change pattern and environment. With this, I would also like to express our profound gratitude to Nivedita Tai ma'am for being here, for sharing your message of how collective with individual actions are important. And with your message, it has showcased and given us an understanding of how our policy brief could also be driven. So thank you so much for that. Of course, this entire conglomeration cannot be expressed or would be less to express that so many sub-theme working groups, institutions, organizations came together with a lot of supporters, not just sitting here, but going outside as well. Possibly, as Mr. Aha from the last Sherpa of C20, when I met him in the last time, he said that I am very excited to see how C20 India would drive. And I think with Dr. Gajananji's message that we have reduced carbon footprints, showcases that we don't want to have C20 only in one place, but we want to take C20 across in every district, in every state, in every country to say. If you see the C20 YouTube channel, you would also see some of the messages from South Africa and how, if I'm not wrong, Satara and South Africa shared history in the past. Can we really look at those examples of shared practices which the G20 principle, as also Nambia sir had spoken? Of course, we are very grateful to Bhagaya ji for being here, for Pujya Gaurangadas Prabhuji for coming here, and for all the civil societies organizations for sharing your practices. Of course, Brigadier ji sir, you have been here, and a lot of others who have been, Ramanand Swarup ji, Pujya Prabhuji for being here, for guiding all of us together. At the outset, this is the only C20 which will not only talk. This is the only C20 which will not only make policies. This is the only C20 which will not only present 10-pager document to the G20 Secretariat. And I say this with profound confidence that this is that C20 which will deliberate policies into actions.
And that we are already doing. From the district in Nandarbar, and maybe planting 25,000 native Indian trees. And that's the example that we want to show. We don't want to tell anyone that you have been wrong. We want to show it to the world that this is how collective responsibility can be taken with individual actions, that the G20 theme at large have been there. Thank you so much for once again for being here. Over the next 2 days, all your suggestions would be accepted in the policy brief that Yojak, with the participation of all the civil society organizations, civil societies at large with individual participation has been bringing. And thank you so much once again for being here. We would love to hear more from you over the next 2 days. Thank you. Namaskar. Dhanyavad. Thank you, Shaileshji. With this, we have completed the inaugural program. We'll take a 5-minute break now and we'll join for a first plenary session.